Hello, everybody. Am I audible to all of you? If you are able to hear me, kindly give me yes in the chat box. Kindly give me yes in the chat box. If you can hear me, kindly give me yes in the chat box. Am I audible to all of you? So happy Diwali to all of you. And today we are going to talk about few things. Okay. We are going to talk about few very important things today. That is the schools of jurisprudence. Now, schools of jurisprudence is a very important concept for all of you, as you know. Definitely going to get asked in exam, ठीक है? So इस बार भी पूछे जाएंगे. Now, schools of jurisprudence को हम लोग अभी इस क्लास में रिवाइज करेंगे. It's not that we are going to talk about in detail, जिसके लिए मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाया हूँ. इफ यू हैवंट चेक दोज टू चेक इट. ओके, मैं jurisprudence के कुछ डिटेल क्लास भी लिया हूँ, like rights of duties. Do check it. Today what we are going to talk about is nothing but a very simple वे ऑफ अप्रोचिंग जुरिस्प्रूडेंस और उसको रिवाइज करना. तो हम लोग फास्ट ट्रैक करेंगे पूरे क्लास को, ठीक है? वी गोइंग टू फास्ट ट्रैक. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डेफिनेटली देयर आर मैं बहुत भी और भी वीडियो बनाया हूं, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हो रिगार्डिंग द जुरिस्प्रूडेंस इन डिटेल, ठीक है? तो आज थोड़ा फास्ट ट्रैक जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे. इन बिटवीन इफ यू विल हैव एनी क्वेरी, यू कैन बेसिकली आस्क मी देन एंड देयर, ठीक है? Now, first and foremost thing, what we are going to learn, as in the schools of jurisprudence, there are various schools are there, ठीक है? बहुत सारे schools आते हैं. So the first school is definitely your analytical school, historical school, natural law school, then pure theory of law, then realist school, okay, philosophical school. So there are so many schools that are under the this jurisprudence portion, ठीक है? But today we are going to do certain jurisprudence school, ठीक है, जो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में इंपॉर्टेंट भी है. एंड उस पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस स्कूल्स को हम लोग फास्ट ट्रैक करेंगे, समझेंगे इन डिटेल वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन. ओके, नाउ दिस जुरिस्प्रूडेंस ऑफ स्कूल समझने से पहले मैं एक दो लाइन बेसिक आप लोगों को बता देता हूं. व्हाट इज देयर? नाउ स्कूल्स एंड जुरिस्प्रूडेंस आर इंटीग्रल पार्ट, ठीक है? क्योंकि jurisprudence means knowledge of law. Now, knowledge can be gathered by the experience. So, the different time period throughout the history, when the different people or different jurists in different time period in different country, how they perceive the law, that is basically encoded in the jurisprudence. और इसी को हम लोग schools of jurisprudence के नाम देते हैं. जैसे आप अगर देखोगे, you will get to see Heraclitus in ancient period of natural law, Rousseau, Hobbes, Locke, Renaissance period in natural law, likewise Savigny, likewise analytical school from your Austin, okay. उसके बाद social engineering Roscoe Pound, sociological school. So this different time period in different area or different country, different jurists came up, given their theory based on how they perceived the law. That's what the schools of jurisprudence all about. Now, schools of jurisprudence की जब हम लोग बात करते हैं, the most important schools that what we are going to learn, the first in the first class we're going to see analytical school, then we're going to get to see the historical school. Both the schools are very important and can be done very very fast, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हम लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी समझेंगे इस क्लास में, ठीक है? अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? नाउ एज आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू थिंग्स, ठीक है? मेरा आज नोटपैड काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट. आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द होल स्क्रीन विद यू, बट लिसन टू मी, ठीक है? आज आप मेरे बात अगर सुनोगे तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये whatever we are going to learn today, okay. So the first thing that what we are going to discuss analytical school, but usse pehle if you haven't watched the
previous videos, do watch it. That will help you a lot. मैं एनालिटिकल स्कूल डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर या डिफरेंट आपके राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर और मैं डिफरेंट केसेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, क्लास भी लिया हूँ. जस्ट डू चेक इट, दैट विल हेल्प यू लॉट. ठीक है, चलो आज जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टुडे वी विल टॉक अबाउट एनालिटिकल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल, एक बार आप पेपर उठा लो. ठीक है, यूज पेन एंड पेपर और यू कैन लिसन केयरफुली. यू कैन, ये तो यूट्यूब में रिकॉर्ड होता ही है तो यू विल गेट टू सी दैट और व्हाट्स दैट थिंग अगेन. बट नॉनदलेस एक पेन एंड पेपर रखोगे, आप क्वेश्चन नोट डाउन, आपके चीजें नोट डाउन करोगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो. ठीक है, सो चलो एनालिटिकल स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिटिकल स्कूल बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग एनालिसिस और एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन की बात होती है. एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन मींस पोस्ट नेचुरल लॉ स्कूल, जब पोस्ट नेचुरल लॉ मोडालिटी छोड़ के जब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और साइंस के स्टार्ट हुआ, ठीक है, पोस्ट रेनेसां पीरियड, देन different branches of school emerged and one of them was analytical school. Analytical school believed in the positive law. ठीक है, पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ एज इट इज, लॉ दैट इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन. ओके, लॉ दैट इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन, नॉट फ्रॉम गॉड. नेचुरल लॉ, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड. So analytical positivists are those people who believe law is coming from the god, law is coming from the human, and human law is the only law that we are going to study. ठीक है, so analytical positivism by the name suggests it is based on positivism, okay, based on positivism and positive law which is coming from the state. Now analytical positivism के दो main pioneer थे, एक है बेंथम, एक है ऑस्टिन. one is Bentham and one is Austin. The two pioneers are very very important for your understanding. Okay, so one is Bentham and Austin. Now Austin was regarded as the father of analytical school also. But the most important thing that needed to be understood, that Bentham's work found out way later than Austin's work. ठीक है, सो इसीलिए बाद में पता चला कि ऑस्टिन के पहले भी देयर वाज वन इंडिविजुअल हु टॉक्ड अबाउट एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, दैट वाज बेंथम. ठीक है, सो हम लोग पहले बेंथम के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑस्टिन के बारे में जानेंगे. ठीक है, सो बेंथम के थ्योरीज, the theories of Bentham are quite important in today's world also. ठीक है, now his theory, before getting into his theory, what Bentham talked about, मैं पहले बेंथम के डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं बेंथम के एक्चुअल जो थ्योरी, दो काइंड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात किया है जो हर बार एग्जाम में आता है, एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है, उसके बाद बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी के ऊपर बात करूंगा. तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेंथम को समझने के लिए. सो फर्स्ट बेंथम के डेफिनेशन ऑफ लॉ. बेंथम स्टेटेड, जो डेफिनेशन ऑफ लॉ बेंथम दिए थे, ठीक है, आप अगर कोई भी किताब उठाओगे यू विल गेट टू सी बेंथम के डेफिनेशन ऑफ लॉ व्हिच इज वेरी वेरी इजी एंड कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली. ठीक है ना, तो बेंथम के जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है वो है कि लॉ इज assemblage of science, okay, and it is also a volition of the state. Law is a volition of the state, that what the definition coming from the Bentham. ठीक है, law is a volition of the state, volition of the state coming from the state, but state volition. Okay, volition, VOLITION. okay, volition. volition अगर आप देखोगे, volition मतलब will, desire, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ बेंथम इज क्वाइट सिंपल कि लॉ का मेन सोर्स है स्टेट, और स्टेट के डिजायर और विल के ऊपर लॉ बनता है. ठीक है, नाउ when Bentham talked about, Bentham also bifurcated jurisprudence in general into two different kind of jurisprudence. ठीक है, Bentham jurisprudence के दो डिवाइड करती है, दो पार्ट में. Bentham stated one that is expositorial jurisprudence and one is sensorial jurisprudence. अगर आपको पता भी है so you'll get to know that. ठीक है ना, so expositorial jurisprudence and sensorial jurisprudence. So Bentham के expositorial jurisprudence means law as it is, मतलब आप जो human law की बात करते हो that is the expositorial jurisprudence.
ह्यूमन लॉ मतलब सर द लॉ कमिंग फ्रॉम द स्टेट। अगर आप अभी यू आर राइडिंग ए बाइक, आपको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आप जब हेलमेट का रूल रेगुलेशन, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? स्टेट बना रहा है। क्यों? हम लोग के सेफ्टी के लिए। सो दिस इज अ पॉजिटिव लॉ, वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लॉ। नाउ पॉजिटिव लॉ इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट एंड व्हिच इज नॉट डिक्टेटेड बाय राइट और रॉन्ग। ये राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से नहीं आता है। हाँ, कुछ हद तक मोरालिटी इसमें हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज सम लॉ, देयर इज सम लॉ वेयर morality and the law, positive law, getting overlapped. But at the end of the day, analytical positivism talks about only the law coming from the human, ठीक है, positive law, ठीक है, law coming from the state। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस के जो दो पार्ट बेंथम ने किया था, एक पार्ट में एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस, पॉजिटिव लॉ, लॉ एज इट इज, लॉ जैसे आप देखते हो वैसा ही है, ठीक है। दूसरा है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट लॉ एज इट शुड बी। लॉज एज इट शुड बी मतलब लॉ जो होना चाहिए, ठीक है। लॉ जो होना चाहिए मतलब इफ यू सी इट्स अबाउट योर राइट और रॉन्ग, ओके, मोरालिटी। सो जूरिस्प्रूडेंस के जो पार्ट है, कि one is what law ought to be or should be and one is law as it is। so बेंथम के दो डिफरेंट काइंड ऑफ jurisprudence के पार्ट दिया जाता है। एक expositorial jurisprudence and another one is sensorial jurisprudence। okay, one second। yeah, now शायद आप लोगों के साइड भी अभी दिवाली चल ही रहा होगा, हम लोग के साइड भी इट्स गोइंग ऑन। ओके, या, सो this very important thing whatever we are talking about, okay, that expository jurisprudence and sensorial jurisprudence, okay, both the aspect important। so bentham में हम लोग क्या क्या देखे? law is volition of the state, okay। second, we have learned expository jurisprudence and sensorial jurisprudence, which is a very important concept to be understood, okay। थर्ड, बेंथम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में आता है वो है यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी मतलब द utilitarianism theory that has been given by Bentham, ठीक है। utilitarianism theory given by Bentham, it means the law is coming from law is coming from the volition of the state, but the main important part regarding law is utility। what do you understand by utility? सर बेंथम utility मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेंथम means maximum good to the maximum number of people, ठीक है। so whatever law is to be made by the state, ultimately it is for the goodness of the large number of people। अगर maximum number of people happy नहीं हो रहा है उस law से, that law is not a good law, okay, under the Bentham। so ultimately the Bentham's understanding is very simple। Bentham is saying the utility or utilitarianism is maximum good to the maximum number of people, and he defined utility as a word। utility को ऐसे describe किए कि कैसे describe किए? utility is a tendency to prevent pain and seek pleasure, ठीक है। ए टेंडेंसी टू प्रिवेंट पेन एंड सीक प्लेजर, इसको यूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी मतलब क्या है कि एक इंसान में एक इननेट टेंडेंसी होता है टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। सो दैट व्हाट बेंथम ट्राई टू से, ठीक है, दैट व्हाट बेंथम ट्राई टू से। तो बेंथम के तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक बेंथम के डेफिनेशन ऑफ लॉ, सेकंड बेंथम के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, ओके। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एंड व्हाट इज यूटिलिटी? अ टेंडेंसी टू अवॉइड पेन एंड टू सीक प्लेजर। नाउ बेंथम की जो थ्योरी है, ठीक है, व्हिच लेटर गॉट ए वेरी this theory of utilitarian theory later influenced लेसर फेयर प्रिंसिपल आल्सो, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो बेंथम के कॉन्सेप्ट है, ओके, बेंथम के जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसका मेन पर्पस ये है कि फंक्शन ऑफ द लॉ इज टू प्रोवाइड दिस एंड्स लाइक
सिक्योरिटी, एबंडेंस, ओके, इक्वलिटी एंड सबसिस्टेंस। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फंक्शन ऑफ लॉ। फोर थिंग्स: subsistence, equality, abundance, and your security. These are the four things most important part for your understanding. ठीक है ना? ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है योर होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेंथम, ठीक है, बेंथम के इस पोर्शन के लिए हम लोग इतना जानेंगे फॉर योर रिवीजन, मोर देन इनफ। ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक ए डिटेल वीडियो रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, रिगार्डिंग द बेंथम। सो बेंथम में हम लोग क्या क्या जाने? बेंथम में हम लोग पढ़ लिए कि we talked about the expository jurisprudence, sensorial jurisprudence, we talked about the utility principle, we talked about the pain and pleasure, and we talked about the function of the law in general. These are the function of the law. ठीक है, that is going to be talked about. अच्छा, एक सेकेंड। now if you have any query to let me know. Next part what we are going to talk about, we are going to talk about ऑस्टिन। ठीक है, हम लोग ऑस्टिन के बारे में जानते हैं, ऑस्टिन ने क्या बोला है, क्योंकि ऑस्टिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एनालिटिकल पॉजिटिविज्म थ्योरी। ठीक है, तो ऑस्टिन का भी जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑस्टिन की थ्योरी में आपको क्या क्या जानना पड़ेगा? ऑस्टिन की थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज ऑस्टिन ने बताया, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, दैट वी नीड टू नो। एंड ऑल्सो ऑस्टिन टॉक्ड अबाउट लॉ इज एक्चुअली डिवॉइड ऑफ मोरालिटी। लॉ में कोई मोरालिटी फ्रोडालिटी नहीं होता है, नथिंग इज देयर। And customary law, custom is not considered as law as per Austin. Okay, international law is also not considered as law as per Austin. ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। Okay, one second, just wait a minute. Okay, wait a minute. So, what are the things that we talked about today is regarding the Austin. Few things are important. ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? So, Austin में first thing that we need to learn is law is the command of the sovereign. Second thing we need to learn is about your law property, so-called, improperly so-called. Okay, these things are going to be very very important for you people for your understanding. Okay, तो हम लोग क्या क्या चीज जान सकते हैं इसमें? एक, ऑस्टिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है। दूसरा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट ऑस्टिन जो जो चीज बोले हैं, दैट इज द क्रक्स ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, बाय द वे। ठीक है, दैट इज द क्रक्स ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। क्यों? ओके, क्योंकि बेंथम के जो रिसर्च है, जो वर्क है, दैट वाज डिस्कवर्ड वे लेटर। ओके, एज ए रिजल्ट everybody was considering Austin as the main pioneer of analytical positivism. Later it found कि Austin also paraphrased Bentham. ठीक है, so Bentham was kind of main pioneer, but though Austin is called the father of analytical positivism. ठीक है, now ऑस्टिन के जो थ्योरी है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, सो लॉ इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट which is absolutely understandably taken for granted कि लॉ तो स्टेट से ही आया है। लॉ इज नॉट कमिंग फ्रॉम द गॉड, बिकॉज वट एवर वी आर सीइंग इन द सोसाइटी, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, इट्स लॉ इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ। ठीक है, सो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में जो ऑस्टिन ने बताया, ठीक है, ऑस्टिन के कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
Morality, law is devoid of morality. Second, international law is not considered as law. Custom is not considered as law. So these are the things is totally negated in Austin's theory. ठीक है? Austin's theory is purely law. The source is coming from the state. उसके ऊपर ऑस्टिन के थ्योरी बेस्ड है और कुछ नहीं. ठीक है? नाउ ऑस्टिन के थ्योरी में दो पार्ट, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. ठीक है? ये दोनों पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को करना पड़ेगा. लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. नाउ लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड इन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड के साथ साथ, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. ओके, सो बेसिकली लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन इज अ वेरी वेरी फेमस लाइन. ठीक है, तो कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. सो एज पर ऑस्टिन लॉ के तीन इंग्रेडिएंट होते हैं, कमांड, सॉवरेन, ओके, एंड सैंक्शन. ओके, so तीन part is absolute, three in essential ingredient that are present in relation to Austin's theory. ठीक है, so command means an authority, okay, an authority giving instructions बोलना भी गलत होगा क्योंकि command is such a, you can say, authority plus order culminating into command. okay, ऑथोरिटी, ऑर्डर एंड सैंक्शन जब एक सेंटेंस में जुड़ जाता है तब उसको कमांड बोला जाता है. ठीक है, सो कमांड एज ए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सुप्रीम एंड ऑथोरिटेटिव इन नेचर. ओके, सो लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स विच इज सुप्रीम, जिसके ऊपर कोई नहीं है. whatever is supreme is sovereign. Okay, so the command has to be coming from the sovereign or supreme. Okay, and third is it is to be backed by sanction. अगर कोई लॉ को नहीं मानेगा, ठीक है, कमांड को नहीं मानेगा, that has to be backed by punishment also. That is another very important thing regarding this aspect. ठीक है, now as per Austin, whether you like the law, dislike the law, it doesn't matter. You have to obey the law. You have to follow the command irrespective of whether it's a good law or bad law. So एक good law और bad law का कॉन्टेक्स्ट ऑस्टिन के थ्योरी में कभी नहीं आता है. ऑस्टिन के थ्योरी में बहुत सिंपल चीज होता है कि it is only related to state giving the command and the people are following it. Simple. ठीक है, so that is the Austin theory. Here there are two kind of groups. One is political superior and one is political inferior. ठीक है, political superior is the group who is basically commanding to the political inferior here. ठीक है, so दोनों ग्रुप के बारे में ऑस्टिन ने बात किया, political superior and political inferior. Okay, now दिस लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑस्टिन ने कहा. ठीक है, सो एज पर ऑस्टिन लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. ठीक है, उसके साथ साथ ऑस्टिन और एक डेफिनेशन भी दिया कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर है, जो लॉ बनाते हैं पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए, जो गाइडलाइन और गाइडेंस देते हैं पॉलिटिकल सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इंफीरियर, those guidance and instructions are also called law. ठीक है, सो ऑस्टिन के कुछ थ्योरी में बहुत एक्सट्रीम, you can say, rigidity can be found, but that what makes Austin as per analytical positivism. ऑस्टिन को ऑस्टिन इसी चीज के लिए ही ऑस्टिन फेमस है, द रिजिडिटी. ओके, नाउ there are law properly so called, improperly so called. There are human laws, there are laws which are not treated as law as per Austin. So there are human laws which are considered as law properly so called, जिसमें सैंक्शन है. ठीक है, तो सैंक्शन के हिसाब से लॉ को डिवाइड किए ऑस्टिन ने. तो एक में जहां पर सैंक्शन है, दैट इज कॉल्ड लॉ
प्रॉपरली सो कॉल्ड, और जहां पर सैंक्शन नहीं है दैट इज कॉल्ड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है। सो ह्यूमन लॉज जहां पर आपके सैंक्शंस होते हैं, ओके, एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लाइक आपके इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी हो गया, कस्टम्स हो गया, ओके, सो दीज आर इम्प्रॉपरली so called, okay. So this is the distinction that is made by the Austin. So Austin के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, बहुत सिंपल है। Austin is absolutely focusing on the source of law as state. He does not count custom as a source of law or any other source of law, ठीक है। He does not regard custom as anything, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कस्टम के बारे में। सेकंड, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए लॉ because international doesn't have any sanction at all, okay. Austin does not believe in morality altogether, तो ऑस्टिन के कॉन्टेक्स्ट में एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में कोई मोरालिटी है ही नहीं, ठीक है। ओवरऑल व्हाट ऑस्टिन बिलीव्स इन वेरी फ्यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। ऑस्टिन स्टेटेड दैट आपको जो जो चीज एक एक इंसान को लॉ मानना चाहिए, बिकॉज लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट, एंड यू हैव टू ओबे द स्टेट इंस्ट्रक्शंस व्हाट एवर हैज बीन गिवन, ठीक है। सो ये ओवरऑल ऑस्टिन की थ्योरी है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, बेंथम, हम लोग पढ़े ऑस्टिन, ठीक है। सो हम लोग बेंथम में क्या पढ़े, बेंथम में हम लोग पढ़े एक्सपोजिटोरियल, सेंसोरियल, लॉ के डेफिनेशन, यूटिलिटेरियन थ्योरी। उसके बाद हम लोग ऑस्टिन में क्या क्या चीज पढ़े, ऑस्टिन में हम लोग पढ़े वी हैव लर्न लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। देन हम लोग ऑस्टिन में पढ़े वी हैव सीन दैट law properly so called, improperly so called, and how custom or different things को perceive किया गया है इस particular चीज में, ठीक है। So we have learned the analytical positivism, बेंथम और ऑस्टिन in this case, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में, ठीक है। तो हम लोग एनालिटिकल पॉजिटिविज्म पढ़ने के बाद we will get to the historical school। मैं हिस्टोरिकल स्कूल में एक बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल by the name suggests it's coming from the history, coming from the custom. So historical school is that school which believes in history, custom. Custom is the source of law, that what historical school believes in, ठीक है। Now, historical school के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर कुछ फेमस लोग भी आते हैं, सैविग्नी आते हैं, ठीक है। उसके बाद हेनरी मेन आते हैं। दीज पीपल आर ए वेरी फेमस इन रिलेशन टू देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वॉट एवर दे हैव टॉक्ड अबाउट। Now, historical school, as the name suggests, talks about the custom as a source of law, ठीक है। So here, law is considered, it's kind of, law is like a language. That was the main theme, okay. And also the historical school main theme is law is to be found, not made, ठीक है। So as per हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ को ढूंढा जाता है, लॉ का एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है इन द सोसाइटी, ठीक है। एज पर द अवेयरनेस, एज द अवेयरनेस develops, okay, the law also simultaneously develops in the society. But that's why law is to be found, not made. So law is to be made is a concept of analytical positivism, जहां पर स्टेट लॉ बनाता है लेजिस्लेशन के माध्यम से। हिस्टोरिकल स्कूल का कहना है लॉ इज टू बी फाउंड, मतलब लॉ को ढूंढा जाता है, लॉ डेवलप होता है, लॉ ग्रो होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है लॉ का, ठीक है। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। ना इसमें दो पायनियर्स जो आते हैं, एक है सैविग्नी, एक है हेनरी मेन, ठीक है। ना अगर आपको सैविग्नी जानना है, ठीक है, सैविग्नी में बहुत सारी चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। सैविग्नी being a German jurist, okay, he talks about lot of things related to Germany and how German and the codification of German laws that plays a very important role in Savigny's understanding, ठीक है। Now सैविग्नी के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए आपको, ठीक है, सैविग्नी का थ्योरी दैट इज कॉल्ड वॉल चेस्ट, ठीक है। सैविग्नी का जो थ्योरी है वॉल चेस्ट, सो वॉल चेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी अंडर सैविग्नी, ओके। वॉल चेस्ट मींस जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल,
Okay, spirit of the people. So as per Savigny is that लॉ, द सोर्स ऑफ लॉ इज द वॉल चेस्ट, मतलब सोर्स ऑफ द पीपल। इंसान जब अवेयर होता है तब लॉ का जन्म होता है। लॉ ऑल्सो डेवलप्स, लॉ इज अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। एज द सोसाइटी ग्रोज, लॉ ग्रोज विद इट। व्हेन द नेशन डाइज, लॉ डाइज विद इट। सो दैट्स हाउ द लॉ evolves throughout the time period of growth of human being, growth of awareness, or the and society also evolves regarding this thing। ठीक है। आपको अगर वॉल्जिस्ट और भी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, सो वॉल्जिस्ट में कुछ कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्जिस्ट मतलब क्या? जैसे अगर आप वॉल्जिस्ट का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब आर्टिकल 21 पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा गया, तब आर्टिकल 21 का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बोला जाता था। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एक सिंपल कॉन्सेप्ट, it was perceived a right to life is only included in the article 21। but जब धीरे 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 जुडिशियरी इसको इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को, सो एज अवेयरनेस ऑफ द पीपल इवॉल्व्स, देयर आर सो मेनी सब्सटेंटिव लॉ एंटर्ड इनटू दैट। ठीक है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू लाइवलीहुड, उसके बाद आपके डिफरेंट, ठीक है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू लाइवलीहुड से स्टार्ट करके आप जितने भी राइट की बात करते हो आर्टिकल 21 में, जितने सारे केस देखते हो, प्रिजनर्स राइट्स देखते हो, उसके बाद आपके ह्यूमन राइट्स देखते हो, ऑल आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस ऑफ द पीपल, कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल इवॉल्व्स, उसके लिए ये देखा जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट सैविग्नी ट्राइड टू से इन दिस केस। सैविग्नी इसी चीज के बारे में बात की कि एक लॉ का इवोल्यूशन होता है जब उस पीपल और द सोसाइटी ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। सैविग्नी का दूसरा भी कॉन्सेप्ट था कि लॉ इज टू बी फाउंड एंड उसका कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, सो कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ। अगर उसका एक मेन एग्जांपल हम लोग ले, दैट इज द हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो हम लोग आज पढ़ते हैं, जहां पर द मेनी थिंग्स कैन बी फाउंड रिगार्डिंग द सपोज सप्तपदी इज टू बी फाउंड। ओके, सो सप्तपदी अगर आप देखोगे तो इट इज पार्ट ऑफ हिंदू लॉ। इट्स ए कस्टम सप्तपदी दैट वी आर हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द मैरिज, राइट? सो that is also very important thing needed to be understood in regarding your this part. Law is to be found and custom is the source of law। ठीक है, सो सैविग्नी का मेन कॉन्सेप्ट ये था। सैविग्नीज कॉन्सेप्ट इज वॉल्जिस्ट, जनरल कॉन्शियस ऑफ द पीपल। एंड सैविग्नी का दूसरा जो मेन पार्ट था, दैट इज योर law is to be found। Law has an organic growth, law grows with the society and the nation, okay, and dies with the nation itself। So overall that's how the law evolves। अच्छा, सैविग्नी की बात करते ही हम लोग जब सैविग्नी समझे, ठीक है, सैविग्नी में और जो कॉन्शियसनेस की बात किया जाता है, ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं हेनरी मैन। हेनरी मैन इज ऑल्सो वेरी फेमस गाय इन रिलेशन टू योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, because this guy is so versatile in his understanding that he went into each and every country to study the law and legal jurisprudence and then gave a holistic overview that of development of law। so henry मैन एक ऐसे जूरिस्ट थे जिसके जिसने सारे कंट्रीज के लॉ को पढ़ने के बाद एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू दिए। ठीक है, हॉलिस्टिक ओवरव्यू देने का मतलब ये था, ठीक है, कि लॉ का डेवलपमेंट ऐसे होता है। ठीक है, लॉ का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। तो उनका कहना था कि लॉ का जब डेवलप होता है उसमें सोसाइटीज, दो काइंड ऑफ सोसाइटी देखा जाता है। एक है प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है, और स्टैटिक सोसाइटी, और एक है डेवलप सोसाइटी और आपके प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हाँ, सो स्टैटिक सोसाइटी में लॉ चार तरीके से डेवलप होता है, 4 स्टेजेस में, एंड देन इट स्टॉप्ड। उसके बाद लॉ का डेवलपमेंट नहीं होता। एंड उसके बाद फर्दर लॉ का जब डेवलपमेंट होता है इन द प्रोग्रेसिव सोसाइटीज, स्टैटिक सोसाइटी टू प्रोग्रेसिव सोसाइटीज। तो स्टैटिक सोसाइटी में लॉ चार तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट इज डिवाइन लॉ,
ओके, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड। सेकेंड स्टेज में ये बोला जाता है दैट डिवाइन लॉ क्रिस्टलाइज्ड इनटू कस्टम्स। उस डिवाइन लॉ जब वाया स्पोक्स पर्सन और किंग जब उसको डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं, दैट इज गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड इनटू कस्टम्स। And in the third stage, when the law and religion getting intermixed, okay, and the birth of priestly class, okay, and the church and जो आप लोग बात करते हो, हाँ, in the fourth stage it is the codification. This codification is not related to legislation by the way, ठीक है। ये codification मतलब पहली बार लॉ को कोड किया जा रहा है और मोरालिटी को कोड किया जा रहा है कि theft is a sin kind of like this, ठीक है। so this codification is not like legislation codification। तो अगर आपको पूरा चीज समझना है तो एक स्टैटिक सोसाइटी में चार तरीके से लॉ डेवलप होता है, ठीक है। तो हेनरी मैन बोला कि these are the four ways by which law develops in any static society. After this fourth stage, if law further develops, then that society will turn into a progressive society, ठीक है। तब इस चार स्टेज के बाद लीगल फिक्शन is another stage, then equity is another stage, and then legislation is the last stage. So we are currently in the legislation stage where the law developed and fully flourished into legislation where we are getting the fruits of the whole development, ठीक है। So Henry Maine basically talked about this journey from static society to progressive societies via development of the law via seven stage, ठीक है। इस सात स्टेज के माध्यम से एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट की बात किया जाता है, ठीक है। दिस दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। नाउ व्हेन इट इज टू बी अंडरस्टूड इन जनरल, व्हेन इट इज टू बी अंडरस्टूड इन जनरल, इट इज नथिंग बट दिस प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ओके, दिस प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक सेकंड, एंड स्टैटिक सोसाइटी, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है अंडर अंडर हेनरीमैन, ठीक है। तो एनालिटिकल स्कूल में जो जो चीज हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसका थोड़ा ऑपोजिट हम लोग वी हैव टू स्टडी इन द हिस्टोरिकल स्कूल। सो वी हैव स्टडीड द एनालिटिकल स्कूल एंड वी हैव स्टडीड द हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है ना। एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ने के बाद, ठीक है, आप अगर दूसरे और एक स्कूल के बारे में बात करोगे, ठीक है, दैट्स योर नेचुरल लॉ स्कूल, ठीक है। नेचुरल लॉ स्कूल इज अनदर स्कूल व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल, कैन बी अंडरस्टूड और नीडेड टू बी अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो नेचुरल लॉ स्कूल इज दैट स्कूल which is basically birth of law and birth of reason, ठीक है। सो नेचुरल लॉ स्कूल जब ये बोला जाता है लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, हाँ, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द नेचर, द बर्थ ऑफ मोरालिटी, फाइंड द find of the reason, ठीक है। reason is found for the very first time in the human being. So these are the things needed to be understood in natural law, okay। so natural law में जो जो चीज आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉ आपको नाम से समझ में आ रहा है, द लॉ इज कमिंग फ्रॉम द नेचर, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द गॉड। सो इन द वेरी नेसेंट स्टेज, ओके, जब आप नेसेंट स्टेज की बात करोगे, इन दैट केस, in the nascent stage, the law is coming, it was presumed law is coming from the god or coming from the mother nature, okay। and then as we are being part of the mother nature, that whole cosmic reason के सब part of reason is also within us, okay। so the situation is very simple, is that's how the natural law is understood, that's how the natural law is understood here। now natural law जब समझना चाहते हो आपको, ठीक है, natural law में तीन डिफरेंट तरीके के चीजें आते हैं, ठीक है। एक natural law in the ancient period, natural law in the medieval period, and natural law in the Renaissance period. This is how the three different part can be found. Natural law in the ancient period, natural law in the your medieval period, and natural law in the ancient period. तीन डिफरेंट एरा में नेचुरल लॉ आते हैं। सो और नेचुरल लॉ के पोस्ट रेनेसां पीरियड देयर इज अ डिक्लाइन इन द नेचुरल लॉ एंड बर्थ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, जो आप सोशियोलॉजिकल स्कूल देखते हो, एनालिटिकल स्कूल देखते हो, हिस्टोरिकल स्कूल देखते हो, ये आफ्टर
after the death of natural, death बोलना गलत होगा, but when the natural laws peak is died down, okay, then different schools emerged, different schools like analytical, sociological, realist school, philosophical school, ठीक है, ये सारे schools का जन्म हुआ after the influence of natural law died down post Renaissance period and the birth of science के बाद, ठीक है. अच्छा, सो वॉट एवर वी हैव लर्न इन द नेचुरल लॉ उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव सीन इन द नेचुरल लॉ it is based on it is based on your law as it should be. Is it based on your it is not based on observation, because whatever you have learned it is based on observation. वो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के पार्ट है. जो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, द इंटेंजिबल पार्ट, दैट इज कमिंग अंडर द नेचुरल लॉ स्कूल, ठीक है. लॉ इज पार्ट ऑफ द रीजन. आप रीजन को, आपके अंदर और हमारे अंदर जो रीजन और फैकल्टी है, वाया विच वी डिसाइड विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, दिस टू बी डन, दिस नॉट टू बी डन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देन नीडेड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी थॉरली, ओके. इसका ही पार्ट नेचुरल लॉ स्कूल में देखने के लिए मिलता है. सो एंशिएंट पीरियड ऑफ द नेचुरल लॉ स्कूल, उसमें 3 जूरिस्ट आते हैं. एक है हेराक्लिटस, एक है प्लेटो, एक है सोक्रेटिस आते हैं, प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल आते हैं, ठीक है. हेराक्लिटस, जिनका पहला, ही वाज द फर्स्ट गाय टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक द destiny, order, how the cosmic reason being we are part of the cosmic reason and the whole nature, so we are also bestowed with some sort of reason like the mother nature. So this was the Heraclitus first understanding was regarding कि कैसे natural law का जन्म होता है, ठीक है. But Heraclitus principle was further developed by Socrates and the Plato and Aristotle. Now Socrates, Plato, Aristotle, they focused on more about the reason फर्स्ट कॉल्ड एज इनसाइट, ओके. इंसान के पास एक इनसाइट होता है टू अंडरस्टैंड विच इज गुड लॉ एंड बैड लॉ, ठीक है. हाँ, और गुड और बैड, ये मोरालिटी का जन्म होता है, इट इज विद इन द पार्ट ऑफ इनसाइट. हाँ, सो दिस understanding of natural law, human reason, the morality, law was presumed to be, or human law is presumed to be inferior to the natural law or the reason or the morality. So morality को ऊपर रखा गया, natural law को ऊपर रखा गया, और human law को नीचे रखा गया, और human law need to be followed, need to be backed or supported or guided by the morality only, okay. That's what all about in the Heraclitus, Socrates, Plato, इस मामले में बताया गया, ठीक है. इवन एरिस्टोटल का एक फेमस लाइन है, रीजन, नेचुरल लॉ इज ए रीजन unaffected by desire, ठीक है. Desire is from the human perspective and reason is nothing but your pure insight which is coming from the nature, ठीक है. Being part of the nature, हाँ, वो we are basically blessed with that. But having said that, ancient period of the natural law fully focused on birth of reason, और इंसान पहली बार कैसे गुड और बैड और मोरालिटी का डिस्टिंग्विश और उसके बर्थ, उसके बारे में ही एंशिएंट पीरियड फोकस करता है, ठीक है. दैट्स व्हाट द एंशिएंट पीरियड फोकस ऑन. When ancient period focused on this particular aspect, okay, medieval period of natural law focused much deeper understanding, ठीक है. क्योंकि post ancient period, in the medieval period, law kind of tinged with religion, ठीक है. Thomas Aquinas is a very famous person in the medieval period, ठीक है. Thomas Aquinas is a very famous person under medieval period. उनका मेन थ्योरी जो था, ठीक है, his main theory is further developed. It is a part of the Aristotle, Plato, Heraclitus, whatever they have said, उसको ही further develop किया थॉमस एक्विनस ने medieval period में,
ठीक है। सो मीडिएवल पीरियड में थॉमस एक्विनस फर्दर डेवलप्ड ऑल द थ्योरीज व्हाट आपके एरिस्टोटल and your Plato, Socrates, and Heraclitus stated. And for the very first time, Thomas Aquinas tried to distinguish between few things. ठीक है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड इन्फ्लुएंस है हम लोग के जूरिस्प्रूडेंस पे। उनके उनके हिसाब से देयर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज दैट आर एग्जिस्टिंग। ओके, सो एज पर हिम, ओके, one is law of God, okay, then natural law, then आपके लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, ओके, देन आपके ह्यूमन लॉ। देर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज दैट टू बी फाउंड। सो उनका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस जो देखने के लिए मिलता है कि देर आर फोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग ट्राइड टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करना भी तो बहुत जरूरी है। उनका कहना यह था कि जो डिवाइन लॉ है, ठीक है, और क्योंकि ये बहुत सारे बुक में कुछ डिवाइन लॉ एंड द लॉ ऑफ गॉड इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सो जो लॉ कॉस्मिक लॉ है, नेचुरल लॉ है, सुप्रीम लॉ है, ठीक है, हाँ, दैट इज द मदर नेचर लॉ, दैट इज द सुप्रीम लॉ, दैट इज वन पार्ट ऑफ द लॉ दैट इज टॉक्ड अबाउट। ओके, सेकेंड इज योर नेचुरल लॉ, कि उसी कॉस्मिक रीजन के सब पार्ट में हम लोग एक छोटा सा पार्ट हम लोग भी दिया जाता है, दैट इज अ नेचुरल लॉ, द रीजन, द ह्यूमन रीजन दैट इज टॉक्ड अबाउट। देन ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स। लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स मतलब जो डिफरेंट, आप जो स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करते हो, व्हाट एवर स्क्रिप्चर्स दैट वी हैव, ओके, गीता, पुराण, और लाइक पुराण, ओके, सो दीज आर द स्क्रिप्चर्स, बाइबल, सो लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, ओके। And then there is human law. Human law is nothing but which is made for coming from the state. So for the very first time in the medieval period, Thomas Aquinas did this distinction, ठीक है, कि देखो देर आर फोर काइंड ऑफ लॉज, क्योंकि पहले तो इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूमन लॉ, नेचुरल लॉ, स्क्रिप्चर लॉ, डिवाइन लॉ, इतने भी सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल, दे यूज्ड टू थिंक देयर आर टू काइंड ऑफ लॉ, ठीक है, लाइक वन इज नेचुरल लॉ एंड वन इज ह्यूमन लॉ। बट थॉमस एक्विनस उस लॉ को फर्दर सब क्लासिफाई किए टू अंडरस्टैंड इट, कि देखिए देयर इज ह्यूमन लॉ, देयर इज नेचुरल लॉ, okay, then there is law of scriptures, and then there is cosmic law और द डिवाइन लॉ, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है, इनका ही एक बहुत इंफ्लुएंस हम लोग के फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में देखने के लिए मिलता है। नाउ इसका जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग और भी मिलता है कि जो ह्यूमन लॉ है दैट नीडेड टू बी दैट नीड टू फॉलो द नेचुरल लॉ एट ऑल द टाइम। अगर फॉलो नहीं होता है, दैट human law should not be followed by the human beings, हाँ। सो जो भी स्टेट लॉ बना रहा है, अथॉरिटी या किंग कोई भी लॉ बना रहा है, दैट नीड टू बी फॉलोड फ्रॉम द natural law perspective, okay, so natural law given the primacy in the natural law area. Now ये एंशियंट पीरियड हुआ, मीडिएवल पीरियड हुआ। मीडिएवल पीरियड के बाद आपके रेनेसां पीरियड के स्टार्ट होते हैं। रेनेसां पीरियड मतलब, रेनेसां पीरियड इज नथिंग बट एक दैट पीरियड जहां पर आपको क्या किया जाता है रेनेसां पीरियड में। रेनेसां पीरियड में इट इज बर्थ ऑफ साइंस, लॉ को और नेचुरल लॉ को डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट किया जाता है। कैसे देखना स्टार्ट किया जाता है? अभी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द लॉ इटसेल्फ। सो जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया नेचुरल लॉ को, तो देखना स्टार्ट हुआ सर नेचुरल लॉ से कोई रीजन फीजन से कुछ नहीं आ रहा है। नेचुरल लॉ बनाने वाला तो स्टेट ही है, ठीक है, लॉ बनाने वाला स्टेट है। सो द पीपल स्टार्टेड टू फोकस ऑन द प्योर ऑब्जर्वेशन, ओके, प्योर ऑब्जर्वेशन ओनली। सो जब प्योर ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया, ओके, एक सेकंड, सो प्योर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात किया जा रहा है।
Now, the most important part that needed to be understood here, okay, that in the Renaissance period, there are few people who are very famous. Hobbes, Locke, Rousseau. They have given the social contract theory under different way. So one, Hobbes have given the social contract theory कि there is an imaginary concept called state and people enter into a contract to create that state. But ये जो state है इसके पास हम लोग एब्सोल्यूट सरेंडर करेंगे, ठीक है. वी डोंट हैव एनी इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट. स्टेट इज वॉट एवर द स्टेट डिसाइड, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट फॉर आवर ओन सिक्योरिटी प्रिजर्वेशन. इसके लिए स्टेट को हम लोग फॉलो करेंगे. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके रिगार्डिंग बात किया जा रहा है, दैट इज द लॉ. लॉ के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इट इज नथिंग बट your main understanding is the individualism and the social contract. So इंसान खुद के प्रॉपर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी बचाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं टू क्रिएट द स्टेट so that the state will protect their properties. Okay, so here individual were given the primacy over the absolutism and the collectivism. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है के है आपके रूसो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्टिविज्म, general will of the people. So all the people to protect themselves, okay, to preserve themselves, for their own good, they enter into a contract, and that's how the society state came into the picture. But society is at the primacy. Whatever society states and follows, state need to follow that. Okay, so Rousseau's theory is based on collectivism, Locke's theory is based on individualism, whereas Hobbes' theory is based on absolutism. Okay, these are the three theories. All have given the social contract, but all the three theories are different in their own nature. Okay, so post Renaissance period, what has happened? Post Renaissance period, there are various the natural law dealt a huge blow and it started to decline. Okay, it started to decline as there are birth of various branches of law started to find. Like the first law हम लोगों को मिला आपके एनालिटिकल पॉजिटिविज्म आया, नेचुरल लॉ बोल रहा हूँ, आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल आया, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल आया, रियलिस्ट स्कूल आया, and 1930 तक all the laws, different laws entered into the picture. Okay, and post 1950-1960 again there is a birth of natural law. Okay, again there is a birth of natural law. That's how the natural law evolved throughout the time. सो 1950 के बाद और एक नेचुरल लॉ आता है, जिस नेचुरल लॉ में आपको जॉन रॉल्स मिलेंगे, जिस नेचुरल लॉ में आपको फुलर मिलेंगे, आपको अमर्त्य सेन मिलेंगे. दिस पीपल आर बिलोंगिंग टू दिस 1950, 1970 और 20th सेंचुरी नेचुरल लॉ. ठीक है, दे बिलीव इन welfareism. Okay, justice as welfareism, they believe in that. Okay, excellent. They believe in welfareism. ठीक है, इसके ऊपर काम करेंगे. Excellent. Getting a call from you. Okay, okay, understanding. So this very important part needed to be understood very thoroughly, very thoroughly, as post 1950 there are John Rawls and your Amartya Sen and Fuller. These people talked about inner morality concept. Okay, Fuller talks about inner morality concept. Okay, then there is a Hart-Fuller debate. That's a totally different concept altogether. Fuller talked about each and every law has an inner morality. There is no other morality, but law itself consisted of inner morality. ठीक है, एक लॉ में एक इनर मोरालिटी आता है जो डिसाइड करता है लॉ अच्छा होगा या नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर दैट नीडेड टू बी understood very thoroughly. But 20th century natural law is basically focused on your
वेलफेयर मैकेनिज्म, आज जो आप अफर्मेटिव एक्शन देखते हो, रिजर्वेशन देखते हो, ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ 20th सेंचुरी नेचुरल लॉ। जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ रहे हो इतने रिजर्वेशन केसेस, ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉ ओनली, ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉ। दैट्स हाउ द नेचुरल लॉ इवॉल्व्स थ्रू आउट द टाइम। ठीक है। सो दिस इज द पार्ट दैट नीडेड टू बी अंडरस्टूड इन योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? वी हैव सो फार वी हैव लर्न analytical school, we have learned your historical school, we have learned natural school। एनालिटिकल स्कूल में हम लोग पढ़े बेंथम एंड ऑस्टिन, हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़े सैविग्नी एंड मेन, हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़े हेराक्लिटस, सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। देन हम लोग पढ़े आपके थॉमस एक्विनस। देन हम लोग पढ़े आपके Hobbes, Locke, Rousseau. These are the people that we have gone through. ठीक है? So these are the things that you need to understand. And if you have any query, do let me know in the comment box. अगर आप लोग के कुछ query है तो हम लोग 3 major schools खत्म कर चुके हैं। Next we're going to talk about the next part of the natural laws, schools of jurisprudence, जहाँ पर हम लोग realist school, pure theory of law and आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल को खत्म कर देंगे। ठीक है। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो। एंड क्लैट पीजी 2027 का बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच स्टार्ट हो चुका है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Thank you. See you again in the next class.